श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने। ॐ आपदामहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. We begin with chapter 3, which has 39 verses or slokas. In this chapter, the poet Rishi Valmiki gives a brief outline of the Ramayana as given to him by Narada. In fact, it is an executive summary of this magnum opus. आज हम इस महाकाव्य के तृतीय सर्ग का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इसमें 39 श्लोक हैं। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्मार्थ सहितम हितम व्यक्त मनवेशते भूयो यद्वृतम तस्य श्री धीमतः। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। Having heard from Narada, as aforesaid, the entire theme of the poem to be composed by him, promising religious merit and worldly prosperity to its readers and hearers, and conferring supreme benefit in the shape of final beatitude, Valmiki sought to discover directly through intuition a detailed life account of that sagacious prince. Upsprishyodakam samyang munihi sthitva kritanjalihi प्राचीनाग्रेषु दुर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। उपस्पृश्योदकं सम्यग् मुनिः स्थित्वा कृतांजलिः प्राचीनाग्रेषु दुर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। Sipping water as a purificatory rite according to the scriptural ordinance, and taking his seat with folded hands on the blades of kusha grass cushion, with their ends pointing to the east, the sage sought to discover the exploits of Sri.Rama through yogic power conferred on him by Brahma. Ram Lakshman Sita bhi Ragya Dashrathen cha Sabharyena Sarashtrena Yat Praptam Tatra Tatvatah Hasitam Bhashitam Chev गतिर्या वाच्य चेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रश्यति। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थीं, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। By dint of that yogic power, he was able to perceive directly and clearly in reality every detail in that state of absorption, all that pertained to Sri.Rama, Lakshmana and Sita, as well as the Emperor Dasharatha, along with his wives and kingdom, how they laughed and talked and moved and whatever they did. Sri Triten cha tatha yat praptam charitavane satya sandhen ramen तत्सर्वम चान्ववेक्षत। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के
साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी वे सब उनकी दृष्टि में आ गई. Likewise, he further directly perceived in order of sequence all that was enacted by Sri.Rama while roaming about in the forests in the company of Lakshmana and Sita, his wife, true to his promise. तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमा स्थितः पुरा यत् तत्र निर्वृतम पाणावामलकम यथा. योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा. Absorbed in deep meditation, that pious sage thereby saw as clearly as one would see a myloban placed in one's palm's hand all that had happened in the past in relation to Sri Rama, Lakshmana, and Sita, as well as that which was still awaited by them. tat sarvam tatvato दृष्टवा धर्मेण सह स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत् सर्वम कृतु मुद्यतः. सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों को योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की. Having seen all that in reality by the use of his yogic power, Valmiki, who was possessed of great wisdom, girded up his lines to render into verse the whole story of Sri Rama, the delighter of all. कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमेव रत्नाढयम सर्वश्रुति मनोहरम स यथा कथितम पूर्वम नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि. महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया. जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है. इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है. यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है. The glorious sage Valmiki composed in verse, as it was told earlier by the high-souled Narada, the story of Sri Rama, descendant in the line of Raghu, which was discussed in a secondary way the subjects of karma, sense enjoyment, worldly prosperity, and expatiation on the merits of two other objects of human pursuit, piety and final beatitude. And thus, full of the jewels like the ocean attracts the ear, as well as the mind of all by the musical ring of its verses and the profundity of their meanings, respectively. Janma Ramasya sumahad viryam सर्वानुकूलताम लोकस्य प्रियताम क्षांतिम सौम्यताम सत्यशीलताम. श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया. The advent of Sri Rama, his superlative prowess, benevolence to all, universal popularity, forgiveness, amiability, and the habit of speaking the truth. नाना चित्राः कथाश्चान्य विश्वामित्र सहायने जनकयाश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम. विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया. श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया. Many other wondrous episodes, the one relating to the descent of the holy Ganga told by Vishwamitra in the course of the journey with the sage Vishwamitra, first to the later's hermitage and then to Mithila, in order to attend the selection of a husband by the princess of Mithila in an assembly of suitors. His breaking of the bow kept by the king of Mithila in an arena
in order to test the suitor's prowess, and the wedding of Sita, Janaka's daughter, and the others, Urmila, and so on. राम राम विवादम च गुणान दशरथेस्तथा तथाभिषेकम रामस्य कैकेय्ये दुष्ट भावताम विघातम चाभिकेशस्य रामस्य च विवासनम राज्ञ शोकम विलापम च परलोकस्य चाश्रयम प्रकृतीनां विषादम च प्रकृतीनां विसर्जनम निषादाधीपम संवादम सूतोपावर्तनम तथा। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ की शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राज गुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया। The vexed dialogue between Sri.Rama and Parshurama over the breaking of the bow, a description of the extraordinary virtues of Sri.Rama, son of Dasharatha, preparations for Sri.Rama's installation as the regent of Ayodhya, and the treachery of Kaikeyi, interruption of the installation caused by Kaikeyi, and Sri.Rama's exile to the forest, the king's grief and lament, and eventual departure from this world, the grief of the people of Ayodhya, and how those who followed him to the forest were made to return by being put off the scent. His dialogue with the chief of the Nishads, and how the charioteer who took Sri.Rama, Sita, and Lakshmana in a chariot to the forest under the king's command was sent back by Sri.Rama after his meeting with the Nishad chief. Ganga yaschapi santaram Bharadwajasya darshanam Bharadwajabhya nugyana Chitrakutasya darshanam. How he ferried across the Ganga and called on the sage Bharadwaj, and his going to Chitrakoot on the later's instruction. Vastu karma nivesham cha bharta gamanam tatha prasadanam cha ramasya pitushcha salil kriyam. His erection of a leaf-thatched hut at Chitrakoot and taking up residence there along with his spouse and younger brother, the arrival of Bharata and how he tried to persuade Sri.Rama to return to Ayodhya and accept his rightful heritage in the shape of the throne of Ayodhya, and how Sri.Rama offered water to the spirit of his deceased father as his last obsequies to the latter. Paduka griyabhishekam cha nandi gram nivasanam dandakaranya gamanam viradhasya vadham tatha. How Bharata installed on the throne of Ayodhya at the symbol of Sri.Rama the preeminent wooden sandal that had the unique honor of being used by the divine Sri.Rama and had been given by the latter to Bharata as a token of his affection and regard for his younger brother, and took up his residence at Nandigram, now a lonely retreat 14 miles away from Ayodhya. Rama's departure to the forest of Dandaka for the fear of being approached every now and then by the people of Ayodhya, and now that they had come to know of his being there and his killing the ogre Viradha. Darshanam sharbhangasya sutikshanem samagamam ansuya samakhyam cha angaragasya charpanam. His visit to the sage Sarbhanga and the meeting with Sutikshana, a pupil of the illustrious sage Agastya, Sita's meeting with Anusuya, the wife of the great sage Atri, and Anusuya's offering of sandal paste, etc., to the former as a gesture of goodwill. Darshanam chapyagastasya dhanusho grahanam tatha shurpanakayascha samvadam virupakarnam tatha. His visit to sage Agastya and the worship or the later, his accepting a bow belonging to Lord Vishnu and presented by the sage, considering him to be eminently fit to receive and wield it, especially for his future conflict with Ravana. Surpanaka's overtures for the marriage to Sri.Rama and her disfigurement at the hands of Lakshmana, who lopped off her ears and nose with a sword. Vadham karitri shiraso rutthanam ramanasya cha marichasya vadham chaiva vedehya haranam tatha. The destruction of the ogress Khara and the Trishira, as well as Dushana and others, and Ravana's mechanization to carry off Sita. The destruction of Maricha disguised as a golden deer by Sri.Rama, and the abduction by Ravana of Sita, the daughter of King Janaka, also called Vaidehi. Raghavasya vilapam cha
गृध्र राजनिर निबर्हणम कबंध दर्शनम चैव पंपायाश्चापि दर्शनम. Sri.Rama's lament over the disappearance of Sita and the death at Ravana's hands of Jatayu, the chief of the vultures. The sight of an encounter with Kabanda, a demon, whose heads and legs are consisting of a mere trunk, with long arms and a huge mouth in his belly, his head and thighs having been forced into his body by a blow from Indra's thunderbolt, as well as of that of the Pampa lake. शबरी दर्शनम चैव फलमूलाशनम तथा प्रलापम चैव पंपायाम हनुमद दर्शनम तथा. A visit to Shabari, an ascetic woman, and partaking of fruits and roots offered by her by way of hospitality. Sri.Rama's raving over the loss of his spouse and his meeting with Hanuman on the banks of the Pampa lake. ऋष्यमूकस्य गमनम सुग्रीवेण समागमम प्रत्ययो तदापादनम सख्यम Vali Sugriva Vigraham. His arrival at Mount Rashyamukh, where the Vanar chief Sugriva was encamping in fear of his elder brother, Vali, by whom he had been exiled and robbed even of his wife, and meeting with Sugriva, his inspiring confidence in the heart of Sugriva by kicking the thing with one single arrow, as many as 7 palmyra trees standing in a row, and his friendship with him, and the combat between Vali and Sugriva. Vali pramathanam chaiva Sugriva pratipadanam tara vilapam samyam varshiratra nivasanam. The destruction of Vali and the installation of Sugriva on the throne of Kishkinda, the lament of Tara, Vali's widow, understanding with Sugriva that at the end of the monsoon, messengers would be sent in all directions to trace the whereabouts of Sita, and Sri.Rama's sojourn on Mount Rashyamukh during the days of the monsoon. Kopam Raghav Sinhasya Balanam Upsangraham Dishaha Prasthapanam Chev Prithivyapischa Nivedanam. The apparent indignation at the negligence of Sugriva of Sri.Rama, a lion among the scions of the Raghuvamsha, and Sugriva's mustering of forces for being sent all over in quest of Sita, and dispatching teams of Vanaras in all directions, and Sugriva's description of the various divisions and subdivisions of the earth for the information of the Vanaras to be sent in search of Sita. Anguliya Kadanam cha Rikshasya Bil Darshanam Prayopaveshanam Chev Sampatesh Chapi Darshanam. Sri.Rama's handing over his ring to Hanuman, how the Vanar sent in search of Sita in a southerly direction under the leadership of Angad, the crown prince of Kishkinda, saw the cave of a bear and sat fasting unto death on the seashore in a desperate mood on their failure to get any clue to the whereabouts of Sita, and how they met Sampati, the elder brother of Jatayu. Parvatarohanam chev sagar seyapi langhanam samudra vachanat chev mainakasya cha darshanam. How Hanuman climbed Mount Mahendra in order to leap across the sea and eventually cross the ocean, and how again he saw and talked with Mount Mainaka, son of Himalaya, that had emerged from the ocean at the instance of the sea god. Rakshasi tarjanam chev chachaya grahasya darshanam sihikayascha nidhanam lanka malaya darshanam. How he was threatened by Surasa, who came disguised as an ogress, and Lankini, an ogress by her very birth, and how he saw and eventually brought about the death of the demoness Simmaka, who brought down flying birds by capturing them by their shadow, and saw the part of Mount Trikuta on which stood Lanka. Ratrau Lanka pravesham cha ekasyapi vichintanam apan bhumi gaman varodhasya darshanam. His entry into Lanka by night to avoid detection by the enemy, and how he reflected all by himself on his future plan. His visit to the ale house and looking around the gymnasium of Ravana. Darshanam Ravan Syapi Pushkasya cha darshanam Ashok Vanikayanam Sita Shiyaschapi darshanam. How he beheld Ravana as well as the Pushpaka, his aerial car snatched from Kubera, the god of riches, and reaching Ashokavana, a grove mainly consisting of Ashoka trees, had a look at Sita. Abhigyan Pradhanam cha Sita Yaschapi Bhashanam Rakshasi Tarjanam Chev
त्रिजटा स्वप्न दर्शनम. His handing over the ring of Sri.Rama to Sita as proof of his identity, and Sita's talk with him. How she was threatened by the ogress appointed by Ravana to guard Sita and bring her round, and how Trijata, a daughter of Vibhishana, also placed by her side, saw dreams auguring well for Sri.Rama. मणि प्रदानम सीताया वृक्ष भंगम तथैव च राक्षसी विद्रवम चैव किंकराणाम निब्रहणम. How Sita gave her own jewel from her head to Hanuman as proof of his having met her, and how the trees of the grove were destroyed by Hanuman in order to convince Sita of his extraordinary might and ability to liberate her from Ravana's captivity. The flight of the ogress guarding Sita and the destruction by Hanuman of the followers of Ravana guarding the grove. ग्रहणम वायु सुनोश्च लंका दहा भिगर्जनम प्रतिप्लवन मेवाथ मधुनाम हरणम तथा. The apprehension by Ravana of Hanuman, son of the wind god, and how he roared while setting Lanka on fire, how he left back across the sea, and he and the other Vanaras forcibly partook in exaltations over the success of their mission, of the honey collected in Madhuvan setting at to nothing the guards of Sugriva, to whom the garden belonged. राघवाश्रा वासनम चैव मणि निर्यातनम तथा संगमम च समुद्रेण नल सेतोश्च बंधनम. How Hanuman brought solace to Sri.Rama by telling him of his having seen Sita and handed over to him the jewel given to him by Sita. How Sri.Rama set out on an expedition to Lanka along with Sugriva and his huge army of Vanaras to recover Sita. How they met the god presiding over the oceans in person at the seashore, and with his assurance to help, how a bridge was built across the sea by the Vanara chief Nala. प्रतारम च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनम विभीषणेन संसर्गम वधोपाय निवेदनम. How the army crossed the sea over the bridge so built and besieged Lanka at night. The contact of Sri.Rama with Vibhishana, Ravana's youngest brother, and a great devotee of Sri.Rama, and how he told Sri.Rama of the ways and means of killing Ravana and the others. कुंभकर्णस्य निधनम मेघनाद निबर्हणम रावणस्य विनाशम च सीता वाप्ति मरेह पुरे. The death of Kumbhakarna, the younger brother of Ravana, the destruction of Meghanath, the eldest son of Ravana, and the crown prince of Lanka, the disposal of Ravana, and the recovery of Sita at the enemy's capital. विभीषणाभिषेकम च पुष्पकस्य च दर्शनम अयोध्याश्च गमनम Bharadwaj Samagamam. The installation of Vibhishana on the throne of Lanka, how Sri.Rama saw Pushpaka, the aerial car belonging to Ravana, and flew in it towards Ayodhya, his landing at Prayag and meeting with the sage Bharadwaj. Preshanam Vayuputrasya Bharaten Samagamam Ramabhishekabhudyam Sarvasanya Visarjanam Sarvarashtra Ranjanam Chaiv Vedehyascha Visarjanam. How Hanuman, son of the wind god, was dispatched in advance to Ayodhya to meet Bharata and apprise him of Sri.Rama's return, and the subsequent meeting of Sri.Rama with Bharata, the festivities connected with the coronation of Sri.Rama, and how the whole host of Vanaras were disbanded and sent away to their respective homes. How Sri.Rama won the heart of his people by his loving rule, and how he exiled Sita, the daughter of King Janaka, also called Vaidehi. Anagatam cha yat kinchit ramasya vasudhatale tachakarottare kavye valmikir bhagwan Rishi. Now, Valmiki, the glorious sage, also described in a superb poem whatever deeds were yet to be performed on earth by Sri.Rama. श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, शरभंग मुनि का दर्शन,
सुतीक्षण के साथ समागम, अनसुया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम के द्वारा खरदूषण और त्रिशरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृध्रराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में मल्यवान पर्वत के पस्त्रवृण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह, श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप समूह आदि का विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋक्षबल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन और उनका प्रायोपवेशन यानी प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिष्टा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, उन अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को
इस पृथ्वी पर श्री राम जी का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 3 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Partaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Om. धन्यवाद।